Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Mohammad Akif. Good evening, Divya, Mohammad Sohail, Devraj ji, Ajay Chauhan, Sushil, Sangeeta, Parsarthi, Kadambari. Good evening, everyone. Sankaran, Ruturaj, Meenakshi, Mr. Mohammed, Mr. Manohar Yadav. Good evening, everyone. कैसे हैं सब लोग? अ, स्वाति, किरण, संजना बेन चौहान, नेहा, गुड इवनिंग. जगत, गुड इवनिंग. तनिष्का, नेहा, गुड इवनिंग. शेख, मुक्तेश्वरी, फयान, अशोक, राम झा, प्रिया, सुवासनी बेन, रश्मिता, मिस्टर वी, मिस रश्मिता, सुरेंद्रन, मिस्टर दीप श्रे, प्रतिदिन्य. गुड इवनिंग एवरीवन. So in next two lectures, including today, we will finish the topic LLP. LLP आप लोग पढ़ के आए होंगे होपफुली. फाउंडेशन में थोड़ा सा चेंज, वैसे तो वही है, थोड़ा सा कोर्स बढ़ गया है. समथिंग सम सिलेबस हैज बीन इंक्रीज इन LLP. तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मी इन फाउंडेशन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स इन फाउंडेशन. और जो मुझे लगता है कि इंटर में जो होना चाहिए, दैट विल बी वन क्वेश्चन फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड वन फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन, बट नॉट श्योर. जो मेरा अपना असेसमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू मी अबाउट 10 to 12 मार्क्स शुड बी फ्रॉम दिस यूनिट, दिस चैप्टर, बट इट मे बी इंक्रीज. ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने कहा है मुझसे कि आपको मैं बोलूं. जो मेरा असेसमेंट है वही लगता है, बट ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि आगे स्कोप LLP का बहुत बढ़ रहा है. तो यू मस्ट गो थ्रू द टॉपिक ऑफ LLP in next two lectures. One query from your side. बेटे दीपश्रे, PDF is already uploaded on the portal. Please check. Tunishka saying sir declaration of dividend में क्वेश्चन में डाउट है, तो we will discuss in the last 10 to 20 minutes. Okay. जिन लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है उनको तो थोड़ा सा ऐड करना है, बाकी दे हैव जस्ट रिवीजन फॉर LLP. तो मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आना शुरू हो जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. So as usual, we will start the topic with the importance of LLP. LLP क्या है, क्यों है LLP, क्या कंसेप्ट है. So let's start with the story. बहुत प्यारी सी स्टोरी है. One day, the story of Tenali Rama, the scholar. One day, Rama went to the goddess Kali temple. He sat in front of idol Kali with his eyes closed and recited the mantra for 1008 times with utmost devotion. And after some time, he heard a voice calling him Rama, Rama. And Ramakrishna opened his eyes, and in front of him was goddess Kali. She said, Rama, I have come to grant you wishes. Look, I have two bowls in my hand. One contains sweet milk. Upon drinking it, you would have acquired great knowledge of the world. And other bowl contains curd, which would give you wealth. But you can choose only one bowl. So think carefully and pick one. Rama mixed both and drank. Rama bowed his head and replied, I am sorry, Ma Kali. But what is the use of knowledge without wealth, and what would I do wealth without knowledge?
Goddess Kali was impressed by his quick thinking and intelligence and blessed him, saying that he would become a great poet and would be known for his intelligence and sense of humor. So this was the story. I'm just repeating in Hindi कि एक बार रामाकृष्ण ने काली की उपासना की और जब काली प्रसन्न हुई तो उन्होंने उनके हाथ में दो कटोरे थे, एक कटोरे में खीर थी और एक कटोरे में लस्सी, दही जिसको हम बोलते हैं। माँ ने कहा कि अगर तुम ये खीर वाला कटोरा लेते हो तो तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, अगर तुम ये दही वाला कटोरा लेते हो तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। रामा ने क्या किया, दोनों को मिक्स किया और पी गया। और उसने कहा कि अगर मेरे पास ज्ञान है पैसा नहीं तो बेकार है, और पैसा है ज्ञान नहीं तो बेकार, तो इसलिए मैं दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब सवाल ये है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टोरी एट दिस पॉइंट। सो द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप and benefit of company both are mixed in one bowl, that is called LLP। कंपनी के जो बेनिफिट थे, जो एलएलपी के बेनिफिट थे, दोनों को मिक्स किया एक कटोरे में और उसको बना दिया गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो व्हाट आर दोज बेनिफिट्स, व्हाट आर द प्रोविजंस अगेंस्ट दिस लॉ, वी विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। एक बच्चे ने कहा सर ये स्टोरी आपने फाउंडेशन में सुनाई थी, मुझे याद है। तो कहानी का मतलब थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है ना। सो important dates, LLP bill was notified by the Ministry of Law and Justice on 9th January 2007, passed by Parliament on 12th December. President consent on the bill was on 7th January 2009. That was called LLP Act, Limited Liability Partnership Act 2008, and that was come into force from 31st March 2009. एक्ट पास हुआ, कंसेंट मिली प्रेसिडेंट की 2008 में, बट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 31st March 2009। इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है। इसकी डेट्स एक बार रीड करो बच्चों, इंपॉर्टेंट है हम आपके लिए। What are the contents of LLP? LLP Act. LLP Act has 81 sections and 4 schedules. First schedule deals with the rights and duties of partner as well as limited liabilities of partners. Its partners and the agreement, formal agreement among the partners. Second schedule deals with the connected with the conversion of a firm into LLP. Third is connected with the conversion of private limited company into LLP, and fourth is connected with the unlisted public company into LLP. Right? Content of the Act, the Limited Liability Act 2008 has been amended, important thing, by the LLP Amendment Act 2021 that is dated on 13th August 2021। इस तारीख को एक नया अमेंडमेंट आया, और जो आपको मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो नोट्स आपके पास हैं वो सारे अमेंडेड हैं। सारे में जो अमेंडमेंट आए हैं वो ऑलरेडी क्लब कर दिए गए। Important points regarding the LLP. This is the main first thing you should learn. Administrative Authority, Ministry of Corporate Affairs, MCA, and the Register of Companies. Regulatory authorities. Regulatory means who will form the law, who will frame the law. The central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act 2008 and can amend them by notification in the official gazette from time to time. And provisions of Indian Partnership Act 1932 are not applicable to LLP. स्पेसिफिक कुछ सेक्शंस हैं जहां पर हम पार्टनरशिप की कुछ बात लेके चलते हैं, पार्टनरशिप को यूज करते हैं, बट जो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस हैं, द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 will not be applicable to LLP. This is clearly mentioned in section 4 of LLP, right? Meaning and concept of LLP.
LLP is a new form of legal business entity with limited liability, separate legal entity. LLP itself will be liable for the full extent of its asset, but the liability of the partners will be limited. Liability of LLP is not limited. Liability of partners is limited in the LLP. Listen, ये आप नोट कर लीजिए, मैंने पहले बोला भी है, पहले भी बोला ये बात कि the liability of partners in LLP is limited, but liability of LLP is not limited. LLP is an alternative corporate business form which gives the benefit of limited liability of the company and flexibility of partnership. Basically, the reason is in company to add the funds is something difficult, something थोड़ा सा बल्कि है, एक हेटिक है. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे, बट नॉट इन केस ऑफ पार्टनरशिप. द मेन negative point of partnership is that the unlimited liability of partners, which is removed in this form. Partners are limited up to the capital in the business. They are not liable to give their personal assets for the loss of the business. Right? So this definition is added in your course, which is not in foundation course. Address. Section 2, subsection 1, clause A. Address means in relation to partners of LLP. In case of individual is residential address. In case of body corporate is registered address. Please mark. In case of individual, residential address, body corporate, registered office. Clear इतनी बात? Any doubt? मैं आपकी क्वेरी देख रहा हूँ बच्चों. ओके. मैंने अभी रियलाइज नहीं किया, अभी आप लोगों से रियलाइज किसी ने याद दिलाया मुझे. Let's see this slide. LLP bill was passed by the Parliament of 12 December 2008. That is, today is the happy birthday of LLP. Good. ये आप ही ने बताया मुझे. Who is दिव्या कुमारी. थैंक यू बेटा रिमाइंड करने के लिए कि LLP को हैप्पी बर्थडे बोल दें सब लोग. राइट? तो एनी डाउट until now? Next, this is main important definition. This can be asked in your exam as a direct question. So please read it carefully. Section 2, subsection 1, clause D. Section 2, subsection 1, clause D. It means company as defined in clause 20 of section 20. Just a moment, beta. Clause 20 of section 2 of the Companies Act 2013. यानी कंपनी तो आ गई. And includes LLP registered under this act. Under this act means LLP Act 2008. LLP incorporated outside India, that is foreign LLP. A company incorporated outside India, that is foreign company. So 4 things till now we have part of the body corporate: LLP, foreign LLP, company, foreign company. LLP, foreign LLP, company, foreign company. But does not include corporation sole business. Sole business concern, a cooperative society registered under any law for the time being in force, and any other body corporate, read with me, any other body corporate which the central government may specify in this behalf. अभी इतना ही पढ़ते हैं. Any body corporate
which the central government specify in this bill. यानी कि कौन कौन इंक्लूड नहीं है? सोल कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर कंसर्न लॉ, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स 4, यानी कि एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, कंपनी, फॉरेन कंपनी, यानी ये तो कवर्ड होती हैं. देखिए, इनमें से किसी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं. तो व्हाट आर इंक्लूडेड? 4 आइटम. व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड? 3 आइटम. कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. ये स्पेसिफिकली मेंशन है. माय क्वेश्चन इज whether HUF is covered in body corporate. Reply. Sole corporation means sole proprietorship, you can say. Now tell me whether HUF can be the part of, can be body corporate. Answer is no. Anmol saying no, Mr. B saying no. Right. Because they are not mentioned in section 2 clause 1 subsection 1 clause B. So what are included? LLP, domestic registered in this act, or foreign LLP, company or foreign company. Not included specifically corporation sole, cooperative society, or any other body corporate which the central government may specify in this behalf. Clear है इतनी बात? Now, these are added for explanation. These words are added not being a company as defined in clause 20 of the section 2 of the Companies Act, or LLP as defined in this act, because these two are covered in section 2 in the definition of body corporate. Clear? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है. HUF is not a body corp. Very good. Nancy is asking, sir, what is LLP? LLP क्या है? चलिए लेते हैं आपकी प्रॉब्लम. बिजनेस आप, you know what is partnership, you know what is company, they are the form of business. जिस तरह से पार्टनरशिप है, जिस तरह से कंपनी है, ऐसी एक न्यू फॉर्म है, इसको हमने क्या बोला? एलएलपी. यानी आप बिजनेस कैसे कर सकते थे नॉर्मल केस में? इंडिविजुअली, पार्टनरशिप फॉर्म करके, कंपनी फॉर्म करके. अब एक नया कंसर्न, नया चीज आई, एलएलपी फॉर्म. एलएलपी क्या है? पार्टनरशिप का एक वो रूप जिसमें कंपनी के बेनिफिट भी दिए गए. In case of partnership, the liability of partners is not limited, that is unlimited to the loss of firm. But in case of limited liability partnership, the liability of partners is limited up to their capital. Right? Clear हुआ Nancy? I think you must be clear about this. Neha is asking, sir, not included में any law for the time being in force means cooperative society as per the law which is created for the purpose of cooperative society. यानी कि cooperative society से concern जो भी law है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर, जो cooperative society है वो कवर नहीं की जाए. ठीक है. गुड इवनिंग प्रियंका. Any doubt on this definition? Please tell me. Devraj is asking, sir, this is the same of company. This is new form. Benefits of both company and partnership are merged in this form. इस फॉर्म में गिवन है. जैसे डॉक्यूमेंट्री जो प्रोविजन है वो कम है, जैसे कंपनी में बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस बहुत कम है. Business includes section 2 subsection 1 clause E
Business includes every trade, profession, service, and occupation except any activity which the central government may by notification exclude. बिजनेस में हर चीज आती है सिवाय उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर देती है. तो which is written on purple, it is added in the amendment act. Originally the definition is like business includes every trade, profession, service, and occupation. But by amendment, these words are included except any activity which the central government may by notification exclude. इस लाइन से गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा राइट मिल गया कि किसी हमको हटा सकते हैं, किस बिजनेस को हम इस लिस्ट में से एक्सक्लूड कर सकते हैं. Chartered accountant, this definition is added in your course which was not in the study module of CA Foundation. Chartered accountant की definition in this section 2 subsection 1 clause F means a chartered accountant as defined in section 2(1) subsection 1 clause B of the Chartered Accountant Act 1949, and please underline, this is important, and who has obtained a certificate of practice under section 6 subsection 1 of that act. It means जहां पे भी इस एक्ट में, wherever in this act we will discuss about the CA or chartered accountant, it means the chartered accountant who is in practice, who is holding the certificate of practice. क्लियर इतनी बात? Designated partner, that was clearly defined in section 7. So at this place, this is the section 2 is connected with all the definitions. So just one line is given for designated partner in section 2 subsection 1 clause J, that designated partner means any partner designated as such pursuant to section 7. Means designated partner means any partner which is mentioned in section 7. Entity, section 2 subsection 1 clause K. Entity means any body corporate which we have discussed, and includes for the purpose of section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, and 53. These 8 sections, 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, and 53, a partnership firm which is set up under Indian Partnership Act 1932. यानी कि इनके अलावा जो सेक्शंस हैं उनके लिए जहां भी एंटिटी की बात होगी, एंटिटी मींस बॉडी कॉर्पोरेट, जो हम डिस्कस कर चुके, बट ओनली फॉर दीज 8 सेक्शंस इन एंटिटी पार्टनरशिप फर्म विल आल्सो बी कंसीडर. इन 8 सेक्शन के लिए पार्टनरशिप फर्म को भी कंसीडर किया जाएगा अगर वहां पर एंटिटी शब्द का यूज होगा. Right? For an LLP, section 2 subsection 1 clause M, it means the LLP formed, incorporated, or registered outside India which establish a place of business within. Registered, incorporated outside India but having place of business in. Right? One query from your side. Sir, it is query from Mr. Ram Jha. Sir, why people incorporate LLP when it's easy to make partnership and easy to maintain company? Listen, company making is not easy. कंपनी में कितने कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे, उसका बेनिफिट एलएलपी में दिया गया. Main benefit of LLP is the limited liability of partnership, which is not in case of partnership firm which is set up under Indian Partnership Act 1932. जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड. एलएलपी में क्या कहा गया कि जो पार्टनर पैसा लगा रहे हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए लोग इस पे ज्यादा फोकस करते हैं. राइट? सर, सुमन इज आस्किंग, sir, can we say body corporate includes Indian and foreign company, Indian and foreign LLP? Yes, वही मैंने आपसे डिस्कस किया.
सर इन एलएलपी विच प्लेस वी शुड कंसीडर एड्रेस, एड्रेस तो अभी डिस्कस करेंगे, पर जो एड्रेस आप दे रहे हो रजिस्टर्ड एड्रेस वही एड्रेस माना जाएगा। सेक्शन 6 वी विल डिस्कस, बेटा प्लीज वेट, अभी आगे कर रहे हैं। Sangeeta is asking, sir, every past chartered accountant holds certificate of practice or not? Yes. Mo- uh, Mostly chartered accountants when prefer practice, so they apply, they hold the certificate of practice. But जो practice में नहीं है वो क्या करते हैं, they don't take the certificate of practice. Sir, please define section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52. We will discuss बेटा, अभी ये चलेंगे, यही करना 2 दिन में, अपने को थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए बेटा। मिस प्रिया, सर हाउ सीए इज रिलेटेड टू एलएलपी डेफिनेशन, वेट आई विल रिप्लाई, अभी नेक्स्ट 2 और 3 स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा आंसर। सर इज रजिस्ट्रेशन अंडर एलपी एक्ट नेसेसरी, डेफिनेटली नेसेसरी है। Ritu Banerjee is saying, sir, section 18, 46, 47 are of partnership act. No, beta. Section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 of LLP Act 2008. Please clear. Sir, who appoint designated partner? अभी तो बेटा शुरुआत हुई है, सब चीज सीख जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये पूरा 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर, section 2 subsection 1 clause I, financial year means April to March, 1st April to 31st March, क्लोज, बात खत्म। लेकिन बट one point is added, what if LLP is incorporated after 30th September of that year, the financial year for this act, financial year for this act may end on 31st day of March of the next following year. Means if LLP is incorporated on 1st April 2023, if LLP is incorporated on 1st April 2023, then financial year will be 1st April 2023 to 31st March 2024. Clear इतनी बात? Second point, if LLP is incorporated on 1st July 2023, then financial year will be 1st July 2023 to 31st March 2024. ये दोनों बात क्लियर हो गई। अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई 1 अप्रैल 2023 को, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अगर फाइनेंशियल ईयर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जुलाई 2023 को, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, पहला 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024। बट if LLP is incorporated on 1st October, after 30th September, 1st October 2023, then financial year in this case under LLP Act will be 1st October 2023 to 31st March 2025। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 1 अक्टूबर 30 सितंबर के बाद,
1 अक्टूबर 2023 को, तो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक, राइट। 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2025, यहां तक कोई डाउट? See the example number 1. If a LLP has been incorporated on 15th October 2019, then its financial year may be from 15th October 2019 to 31st March 2021. But Income Tax Department has prescribed the uniform financial year from 1st April to 31st March of the next year. In keeping with this income tax law, the financial year for the LLP should always be from 1st April to 31st March each year. तो जो कहानी निकल के आई इन सब में कि साहब एलएलपी ने तो आपको बेनिफिट दे दिया। क्या बेनिफिट दिया? एलएलपी हैज गिवन द बेनिफिट दैट if the period of financial year, first financial year of LLP is less than 6 months, 6 months or less, then you need not to submit the financial statements in next year. You can come for the period of more than 1 year. अगर 6 महीने से कम की है तो आप अगले 1 साल को भी जोड़ लो, तब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर लो। बट इनकम टैक्स क्या कहता है कि भैया हर साल चाहिए मुझे। तो नॉर्मली इनकम जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो हम कौन सा मानते हैं? अप्रैल टू 31st, राइट। नाउ प्लीज आस्क द क्वेरीज ऑन दिस पॉइंट। Sir, who is the designated partners? We will discuss in section 7. Wait. From income tax point of view, LLP is better or partnership? I think you should go for the income tax faculty. In module, it is mentioned Indian Partnership Act 1932. Which is mentioned in the Partnership Act? Please. Sir, if LLP incorporated on 30th September, chaliye, tell me. You tell me. If LLP is incorporated on 30th September 2023, what will be the financial year? 30th September 2023 to 31st March 2024. दिव्या इज सेइंग सर फिर तो मैं भी एलएलपी सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट करूंगी। बेटे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डूइंग बिजनेस देन यू विल वेट फॉर सितंबर। नहीं ना, अगर आप बिजनेस करना है तो सितंबर वेट नहीं कर रहे। तो ये चीजें तो आपके बेनिफिट के लिए, ये तो कंपनी जो एक्ट है उनने एडिशनल बेनिफिट दिया है। ये सोच के प्लान नहीं किया जाता कि हमें सितंबर के बाद बिजनेस करना है या सितंबर से पहले बिजनेस करना है, राइट। Sir, what if the company incorporated on 1st March? Let's say company was incorporated, LLP, sorry, not company, it should be LLP. Let's say LLP was incorporated on 1st March 2023. Then financial will be 1st March 23 to 31st March 2024, right? किरण, मैं आपकी क्वेरी को अभी ब्रेक के बाद ले लूंगा, ठीक है? If LLP is incorporated on 30th March 23, financial will be 30th March 2023 to 31st March 2024. Sir, if LLP incorporated after September, then which year we filed our return? In the year 2024, 25. First, you must clear which return you are talking. Income tax return or annual return under LLP. ये क्लियर करो बच्चों।
सर वेटिंग फॉर सुपर ओवर, अभी तो बेटा शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो खत्म शुरू ही नहीं हुई एलएलपी, सुपर ओवर कहां से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलएलपी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 clause n, LLP means partnership formed and registered under this act. Which act? LLP Act 2008. LLP agreement means LLP deed, partnership deed. It means any written agreement between the partners of LLP, between the LLP and its partners. Agreement है partners के बीच में और LLP के साथ, which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to LLP. These are not very much important for examination point of view, but you must have the knowledge. ये मेरे अपने विचार हैं, ऐसा मत समझना इंस्टीट्यूट ने मुझे बोला आप लोगों को बोलने, राइट। नेम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज P in relation to partner of the LLP, in relation to, प्रणाम कीजिए इसे, partner. If partner is individual, his first name, middle name, surname means full name, like me, Sudeep Kumar Jain, right? If body corporate, it registered name as per concern law. अगर LLP है तो LLP एक्ट में क्या नाम है उसका, फॉरेन LLP है तो उसका रजिस्टर्ड नाम क्या है, वॉट एवर, राइट। पार्टनर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज Q, partner in relation to LLP means any person who becomes a partner in LLP according to the LLP agreement. LLP agreement we have already discussed, partnership deed. Regional director section 2 clause RA means a person appointed as such by central government. If central government regional director appoint करेगी, that will be called regional director. Registrar section 2 subsection 1 clause S means a person appointed by central government. Main thing is central government, appointed by central government as registrar, additional registrar, joint registrar, deputy registrar, assistant registrar as per the central government. Decide करेगी किस एरिया में हमें कौन को रखना है. This is newly inserted definition in Amendment Act, Section 2, Clause TA, Subsection 1, a small limited liability partnership. It means, listen carefully, it means a LLP, the contribution of which means capital contribution, does not exceed does not exceed 25 lakh rupees, up to 25. Stay on this point. इसको ऐसे पढ़िए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी फर्स्ट यू रीड लाइक मी. Small LLP means LLP, the contribution of which up to 25 lakh rupees and the turnover of which as per the statement of accounts and solvency of for immediately preceding financial year. Simple language भाषा में बात करें तो balance sheet, as per the balance sheet, financial statements does not exceed 40 lakh rupees. It means which is the small LLP having capital contribution up to 25 lakhs and turnover up to 40 lakhs of preceding year. Both conditions should be satisfied. Then it is called a small LLP. या फिर और which meets such other requirements as may be prescribed and fulfill such terms and conditions as may be prescribed. As may be prescribed means prescribed by the rules, right? यानी कि आपको चेक करना है, if you want to check whether your LLP is small or not, so first you check these two conditions are satisfied. If satisfied, question is end. अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म हो गया, LLP small हो गई. But if you do not satisfy, your LLP does not satisfy
these two conditions, then go for third. अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन बनाई है, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो भी वो स्मॉल एलएलपी कहलाए, राइट? तो व्हाट इज द स्मॉल एलएलपी? फर्स्ट, both two conditions satisfied, capital up to 25 lakh, turnover up to 40 lakhs. If not satisfied, then come to the condition number 3, right? Now, what is the meaning of this line? Or such higher amount not exceeding 5 crore rupees as may be prescribed. Means at present it is 25 lakhs, but it may be increased in the rules up to 5 crore. 5 करोड़ तक कराने के लिए हमें बिल पास नहीं कराना पड़ेगा, हमें एक नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा और ये लिमिट बढ़ जाए, क्योंकि आज 25 लाख है, आगे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमें लिमिट बढ़ानी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट ने कहा ओके, now 25 lakh and 40 lakhs, but we mention in the act this may be increased up to 5 crore in case of capital and 50 crore in case of turnover by notification. clear itni baat? But at present it is 25 lakh and 40. Any doubt, please? Up to this point, any doubt? Okay. Tribunal, section 2, subsection 1, clause U, means NCLT, National Company Law Tribunal, as mentioned in section 408 of Companies Act. यानी कि इसके एलएलपी के फैसले अगर ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वो वही ट्रिब्यूनल है जो कंपनी एक्ट में डिफाइन मेंशन किया. इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, words and expression used and not defined in this act but defined in Companies Act 2013 shall have the meaning respectively assigned to them in that act. Means if any word or expression is not mentioned in LLP Act but mentioned in Companies Act, the meaning should be taken from that place. अगर मान लीजिए कोई वर्ड और एक्सप्रेशन जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, भूल से रह गया, पर कंपनी एक्ट में डिफाइंड है, तो मतलब वहां से लिया जाए. ठीक है? एंड सेक्शन 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट the provisions of Indian Partnership Act 1932 will not be applied to the LLP. 5 crore means its limitation ना सर. नेहा means अभी 25 लाख की, देखो अभी 25 लाख की लिमिट है. ये लिमिट को गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है 5 करोड़ तक. देखो जब भी नया लॉ आता है तो हमें एक्ट पार्लियामेंट से पास कराना होता है, बट यहाँ पर 5 करोड़ तक जाने के लिए हमें पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत नहीं है. नोटिफिकेशन जरिए हम इसको 5 लाख तक कर सकते, 5 करोड़ तक कर सकते हैं सर, राइट सर? व्हेन इट विल बी 25, एट प्रेजेंट इट इज 25 lakhs, बट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन its limit can increase its limits up to rupees 5 crore. ठीक है? दिव्या सर 25 लाख और 5 करोड़ के बीच में जैसे 40 लाख भी कर सकते हैं. यस, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है अप टू 5 करोड़. क्या उसके लिए भी नोटिफिकेशन डालना होगा? डेफिनेटली. विदाउट नोटिफिकेशन तो कोई रूल ही नहीं आएगा. रूल अगर चेंज करना है तो नोटिफिकेशन चाहिए. ठीक है ना? Now characteristics same as characteristics of company. LLP is body corporate, separate legal entity. Perpetual succession means death, insanity, retirement or insolvency of partners has no impact on the existence of LLP. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, मैन में कम मैन में गो, द एलएलपी विल गो फॉर एवर. मीन्स जिस तरह ट्रेन होती है ना, लाइक ट्रेन, कोई भी आए कोई भी जाए, ट्रेन चलना है, कोई नहीं भी तभी ट्रेन चल रही है. सेम थिंग लाइक LLP. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, separate legal entity same as
company means the creditors are of LLP are the creditors of LLP, not the creditors of partners. Limited liability, the liability of partners will be limited up to their agreed contribution in the LLP. जितना उन्होंने तय किया है इतने के liable होंगे उतने तक ही वो liability रहेगी. Mutual agency, all partners will be agent of LLP, not for other partners. In case of partnership क्या था? Working for all. Each partner is responsible for the acts of other partners, but not in this case. Only LLP will be liable for the acts of the partners. No one partner can bind the other partner by their acts. LLP agreements means their LLP deed, right? Sir, Neha is asking, sir, up to 5 crore क्योंकि बार बार अमेंडमेंट करने पे इशू ना आए. नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक्ट पास कराने के लिए वी शुड हैव द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट. बोथ पार्लियामेंट, दोनों दोनों सदनों की हमें वो चाहिए होती है, कंसेंट चाहिए होती है. इसलिए मेंशन कर दिया गया कि 5 करोड़ तक कोई इशू नहीं है, राइट. तो 5 करोड़ तक करने के लिए हमें पार्लियामेंट से पास नहीं कराना, हमें नोटिफिकेशन डालना है और ओके हो जाएगा. रूल्स में मेंशन कर दिया गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Minimum and maximum number of partners, minimum 2, maximum no limit. That is only business. LLP should be for business purpose, no charity purpose. It is artificial legal person, यानी कि its identity only in the eyes of law. It cannot be sent to jail. It cannot take an oath. It cannot marry or get divorced, nor it can practice like a chartered accountant. Okay. Rahul is asking, sir, like AOA, MOA definition is not given in LLP, then definition as per company that shall apply. What are you saying, sir? Your question is like AOA, MOA definition is not given in LLP, then it's from Companies Act. Sir, no use of the words AOA and MOA in case of LLP. LLP में कहीं use नहीं आएगा sir इनका. Common seal, as in Companies Act, common seal is not mandatory. In the same thing, common seal is actually the stamp of metal. When the you press this seal on the paper, the name is engraved, right? But अब ऐसा नहीं है, इसकी requirement compulsory नहीं है. Management of business in company, who will manage the business? Directors. The same role in case of LLP played by designated partners. आप लोगों ने किसी ने पूछा था ना, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में. सेम रोल कौन प्ले करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स यू कैन से. But only designated, the partners in the LLP are entitled to manage the business, but only the designated partners are responsible for legal compliance. Conversion into LLP, a firm, private company or unlisted public company can be converted into LLP. Remember schedule 2, 2nd, 3rd and 4th. Investigation rights, central government. Central government shall have the power to investigate in the affairs of LLP by appointing a competent authority for the purpose. Compromise and arrangement, settlement, you can say. Any compromise or arrangement including merger, amalgamation of LLP shall be in accordance with the provisions of LLP Act 2008. यानी LLP Act में provisions हैं compromise arrangement के, वही applicable, right? For an LLP, we have discussed LLP incorporated outside India but having place of business in India, right? One more thing is e-filing of document. Every form or application document, it should be e-filed on the portal of LLP. Every form or application of document required to be filed or delivered under the Act and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on its website, that is www.mca.gov.in, and authenticated by the partners or designated partners of LLP by the use of electronic or digital signature, right?
advantages. This question can be asked for 4 marks in your exam. That question. What are the advantages of LLP? This question, I think, important for your first attempt. Your first attempt में ऐसे question पूछे जा सकते हैं कि what is the importance of LLP? Sir, public company can be converted, unlisted public company can be converted into LLP, right? Harsh Singh is asking, sir, while writing in the exam, good question from Harsh, very good. Sir, while writing, listen everyone, while writing in the exam, do we have to write such higher amount or not? उनका क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने बताई और हमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हमें 25 लाख के साथ 5 करोड़ को भी मेंशन करना है क्या? देखिए, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, इफ डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, अगर उन्होंने डेफिनेशन मांगी इंस्टीट्यूट ने, तो आपको लिखना चाहिए. You must write if the direct question is asked on this point. Right, define the small company. So you must write detailed definition. यानी कि it means you must write 25 lakhs, you must write 5 crore. But if a descriptive question is asked, practical question is asked, then in that case you are solving the problem. I think it should be sufficient if you mention only 25 lakh and 40 lakh. Clear itni baat? So what are the advantages? It is easy to form LLP. LLP agreement can be customized according to the needs, according to meet the needs of partners. Partners के according जितना तक business रखना है उतना sufficient. It operates on the basis of agreement, that is partnership deed. No minimum capital requirement. LLP faces less compliances and tax burden when compared to company. LLP provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirement. Flexibility कि आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे कम रखना है, कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं हमको डिपार्टमेंट में. Liability of partners is limited, which is not in case of partnership firm. Dissolution procedures are easy as compared to. Please read it, learn these 8 points. भाई बच्चों बोलो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नींद तो नहीं आई किसी को? These 8 points are sufficient. In case of Mr. Mohammed is asking, if increase of LLP will be framed if in case of LLP will be framed in the past year with the contribution 25 lakh and turnover 40 lakhs. A small LLP, but this year the will increase the contribution of 25 lakh and turnover is 60 lakhs. Is called small LLP or not? कह रहे हैं ये कि सब पिछले साल 25 लाख की टर्नओवर 40 लाख से कम था, लेकिन आज जो है वो 50 लाख की हो गई कैपिटल. कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में लिसन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में डेफिनेशन में ये नहीं कहा गया है कि वो किस प्रीसीडिंग ईयर की है. दे ओनली आस्क, आई एम जस्ट टेकिंग बैक. देखिए, in point number 2 it is mentioned as per the financial statement of preceding financial year, but in case of point number 1 it was not mentioned. It means at the point you are checking whether company is small or LLP is small or not, on that day what is the capital contribution in the LLP, that will decide whether your LLP is small LLP or not, right? नेहा कह रही है सर इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? नींद नहीं आनी चाहिए भाई। अगर अभी सो गए तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे? वहां भी सोना पड़ेगा। चलिए, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर बॉडी कॉर्पोरेट इफ रजिस्टर्ड, बट रेस्ट्रिक्शन फॉर इंडिविजुअल व्हाट शुड बी? He should not be of unsound mind. Who is unsound mind? Remember, the person who is not getting the sound in his mind, he is unsound mind. जिसके दिमाग में साउंड ही नहीं जा रहा है, आप कुछ भी कहते रहो, वो अनसाउंड माइंड। He is undischarged insolvent. Insolvent declared by the court. Still is insolvent. Third point, applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending. अप्लाई कर दिया, भैया मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। आई डोंट हैव एनी मनी टू पे माई लाइबिलिटीज, प्लीज डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट। द एप्लीकेशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट, ही इज ऑल्सो नॉट capable to be entered as a partner, right? Sir, can LLP sue its own partners? Definitely yes, because it is a separate legal entity. Sir, is there any concept like corporate will theory? Maybe. हर्ष सिंह सर, आप पढ़ाओ और नींद आ जाए, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। वेरी गुड, तो मजा आ गया सुन के मेरे को बात बेटा तो आपकी। वेटिंग फॉर सुपर ओवर। नेहा वेट कर बेटा, अभी सुपर ओवर का टाइम नहीं आया, थोड़ा सा वेट कर। इफ एन एलएलपी नॉट ए स्मॉल एलएलपी can become a small LP by reducing its capital and lowering its production. Yes. Two things. At that time, contribution is less than 25 up to 25 and turnover is less than 40. Clear? देवराज, मिस्टर वी सर, आप भेजो मेरे को, अभी आपका मिला है जवाब। जस्ट आई रिसीव्ड योर क्वेरी सर, आर माई डाउट रीचिंग यू? आई रिसीव ओनली दिस क्वेरी, प्लीज सेंड योर क्वेरी। सर, देवराज इज सेइंग सर, your teaching is the best because very slow we understand. Very good. Sir, minor become a partner of LLP. Listen, minor is not eligible. He is not eligible to enter into contract, right? Minor नहीं होना चाहिए। Minimum number of partners. At least 2 partners. Lifting of corporate veil. One person, one of you have asked the concept of corporate veil. See point number 2. If any time the number of partners of LLP is reduced below 2, 2 से कम हो गए, and the LLP carries on the business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is only partner, अकेला आदमी, of LLP during that time, it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone, shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period. पता, 2 में से पार्टनर चला गया, एक छोड़ के चला गया, एक रह गया, और आपको पता है आप अकेले हो, तो आप 6 महीने के अंदर पार्टनर जोड़ लो भाई। अगर 6 महीने में नहीं जोड़ पाए तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, यू बिकम द सोल कंसर्न, राइट? Someone is asked, sir, difference between small and large LLP. You are clear with the small LLP? What is small LLP? Clear? Then which is not small LLP? It is large LLP according to you. ठीक है? Designated partners, section number 6, most awaited section. काफी देर से बच्चे वेट कर रहे हैं। सर, रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है? मिस्टर वी इज आस्किंग, इज देयर एनी एज रेस्ट्रिक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन? लिसन, मिस्टर वी, just wait.
2 और 3 स्लाइड से और उस समय के लिए वेट करो आप, इसको इस टॉपिक को आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। Every LLP shall have at least 2 designated partners. At least 2, maybe more than 2. दो चाहिए ही चाहिए भाई, अंडरलाइन कर लो फटाफट से। Who are individual and at least one of them should be resident. At least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident. Important, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। 2,000 रुपए का नोट है जो बंद हो गया, इंपॉर्टेंट वाला, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? इफ इन LLP ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में भी तो पार्टनर ना, इन सेक्शन 6 वो भी हैव डिस्कस ना। इफ इन LLP all the partners are body corporate or in which one of the more partners are individuals and body corporate, या तो सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं या कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट। either all the partners are body corporate or the combination of body corporate individuals, at least 2 individuals who are the partners of such LLP or nominees of such body corporate. It means if body corporate wants to be the partner of LLP, it must nominate one individual for the documentary formalities. भाई LLP को तुमने बना दिया, कंपनी को बना दिया पार्टनर, ये तो अलाउ कर दिया, तो कंपनी खुद थोड़ी आएगी, कंपनी की बिल्डिंग थोड़ी ना आएगी, कोई ना कोई तो आएगा ना उसके बिहाफ पर। दैट इज कॉल्ड नॉमिनीज। तो एक था ना वो राजू श्रीवास्तव का जोक था कि सब ABC प्राइवेट लिमिटेड वेलकम्स यू। अब बिल्डिंग खुद थोड़ी झुक जाएगी, उसके बिहाफ पर कोई जो इंडिविजुअल्स हैं वो वेलकम कर, राइट। तो अगर सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं या कॉम्बिनेशन, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? नॉमिनी या इंडिविजुअल, राइट। सी द एग्जांपल नंबर 2। A LLP by the name SMY LLP has 3 partners, namely SI Limited, MIS Limited, or YI Private Limited. All the 3 partners are body corporate. If there is no individual is partner in LLP, nominees of any 2 said body corporate shall act as designated partners. कौन रन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर रन। तीनों कंपनी पार्टनर है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इनके जो नॉमिनी होंगे तो कम से कम चाहिए। दे विल वर्क एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। Example number 3, a LLP has 3 partners, 1 individual, Mr. X, and 2 body corporate, XYZ and ABC Limited. In this case, Mr. X and 1 nominee of the body corporate shall be the designated partner, right? तो क्या क्वेरी आई आपकी? श्रेयांश is asking, sir, did you took my doubt? Beta, please send me once again. So उनका नेटवर्क इशू था श्रेयांश आपका शायद। दिव्या सर फिर तो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी डेफिनेटली, अगर एक ही पार्टनर रह गया तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सर these same condition, Rahul is asking, sir, these same condition of section 6 applies in case of company. Yes. Section 3A in case of company. Yes, right. ओहो, नेहा ने पूछ रही है। नेहा क्या, नेहा क्वेश्चन बड़ा अच्छा सिली सा क्वेश्चन नहीं था नेहा। शी इज आस्किंग, सर पार्टनर रिड्यूस हो गए तो LLP ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन OPC और सोल प्रोप्राइटरशिप। कैसी बात कर रहे हो? परपीचुअल सक्सेशन है, रेलगाड़ी है, अकेला आदमी भी हो तब भी रेलगाड़ी चलेगी। मैन में कम, मैन में गो, द LLP विल गो फॉर एवर। वो LLP रहेगी, OPC में कन्वर्ट नहीं होगी। दिव्या
इज आस्किंग सर, दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? कितने भी हो सकते हैं, जितने पार्टनर हो सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। Ruturaj, is the sorry, is the partner liable for those liabilities incurred during 6 months after the expiry of 6 months, or liable for those liabilities incurred after 6 months? In my views, he will be liable for the liabilities after 6 months. Mehreen Khan is saying, sir, it need not be the nominee need not be the director of the body corporate. Yes, any person nominated by the body corporate. Sir, in case all the individual partner die and there is no body corporate, then what happened? Even in that case, there is no end winding up of LLP. If it decided by the court. Sir, resident of India in case of designated partner means Miss Anindita. See your answer in next slide. Resident means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding 1 year. It means when you are checking whether you are resident or not, just take 1 year preceding period. In that period, if you are in India for 120 days, it means you are resident in India. इससे पहले ये 182 डेज था, 182 डेज बट रिड्यूस टू 120 डेज. मिस्टर वीज आस्किंग, सर हम रियल लाइफ में एलएलपी के बारे में क्यों ज्यादा नहीं सुनते? पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, बट मेरे ऑफिस में भी मेरे जितने नए क्लाइंट बन रहे हैं, आई प्रीफर दे शुड गो फॉर एलएलपी. मेरी एडवाइस रहती है कि भैया आप एलएलपी में जाइए, कंपनी से बेटर एलएलपी है. Someone is asking, sir, if there are two individual partners and two body corporate, can still two nominees of body corporate become designated partners if individual don't want to become designated partners? Yes, your answer is yes. Please see the example number 3. There is an LLP by the name Indian Helicopters LLP having 5 partners, namely Mr. A, non-resident, Mr. B, non-resident, Mr. Miss C, resident, Miss D, resident, Miss E, resident. In this case, at least two should be named as designated partner, out of which one should be resident. Hence, if Mr. A and Mr. B are designated partner, then it will not serve the purpose because both are non-resident. So one of the designated partners should be out of Miss C, Miss D, and Miss E, right? आगे बढ़ते हैं. If the who is the designated partner? We have discussed who can be the now. Who will be the? If the incorporation document specifies who are to be the designated partner, such person shall be designated partner or incorporation. It means when you will submit the documents for the purpose of incorporation of LLP, you must mention who will be the designated partner. Then, as as the LLP registered, those person will be called designated partners. Or states that each of the partner from time to time of LLP is to be designated partner. Every partner shall be the designated partner. Means after the incorporation, who is considered in the LLP as designated partner will also be considered as designated. यानी कि
क्या कहा इसमें इस सेक्शन सबसेक्शन में कि जो जिनका नाम इन कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट में गया एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर दे विल बी कॉल्ड, और जो बाद में चेंज होते रहे, चेंज होके जो बने, वो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर, राइट. Any partner may become a designated partner by and in accordance with the agreement, and a partner may cease to be designated partner in accordance with the agreement. यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा, इस पोस्ट से हटेगा, वो एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में मेंशन किया जाएगा द प्रोसीजर टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर और टू बी सीज एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, राइट. An individual shall not become a designated partner in LLP unless he has given his prior consent to act as such to the LLP in such form and manner as may be prescribed. यानी कि अगर आप if you want to say, if you want to say to a department or registrar that फला person Mr. So and so will be the designated partner, तो पहले उसकी consent तो ले लो भाई. You must take his consent, prior consent. I I incorporated LLP and I say Mr. Mukesh Ambani will my designated partner in the company, in the LLP. I must submit his prior consent to the registrar, right? Every LLP shall file with registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partner in such form and manner as may be prescribed in 30 days of his appointment. यानी कि if the LLP is appointing Mr. So and so as designated partner, his prior consent to be submitted to the department, that is the ROC, Register of Companies, submit की जाएगी within 30 days from the date of his appointment, right? An individual eligible to be designated partner shall satisfy such condition and requirement as may be prescribed by the rules. जो भी रूल्स में कंडीशंस लिखी हैं, they must be complied, that compliance should be given by the designated partners. And every designated partners of LLP shall obtain a DPIN. जैसे कंपनी केस में होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, in LLP case designated partner identification number, registration number from the central government, and the provisions of Companies Act section 153 to 159 will be applicable mutatis mutandis. Mutatis mutandis means as it is, will be applied for the said purpose. Actually, I have also read this word mutatis mutandis. तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, बड़ा अजीब सा शब्द था, तो मुझे समझाया, कहता you have watched the movie Arju, of old movie, very old movie of Mr. Rajendra Kumar, in which the Mr. Mahmood was the owner of a houseboat, और वो हर बात पे बोलते थे, जैसे कोई राजेंद्र कुमार कुछ बोलते थे तो बोलते थे, महमूद बोलते थे मुतांदिस बाबूजी, मुतांदिस मीन्स जो आप कह रहे हो एज इट इज, राइट. तो मुझे अपने मतलब चीजें मिल जाती हैं कई बार मूवीज में. चलिए आपकी क्वेरी ले लूं, यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो बताओ मुझे, देन इसके आगे बढ़ेंगे, पर यहाँ से पहले क्वेरी आपकी. Sir, can you give, please give us one LLP name which is reality in existence. बहुत सारी हैं बेटा, ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा नाम कोई. कई होटल्स भी LLP में चल रहे हैं. If any LLP, is there any procedure for election of designated partners? No, there is not election procedure. It is the application and the everything is should be as per the base, on the basis of agreement. Sir, if any LLP, there are 10 designated partners where only one is resident, then it's okay. Yes, okay. Sir, consent in writing, definitely in writing. Oral तो चलता ही नहीं मेरे दोस्त. सर मुकेश अंबानी तो किसी का भी नाम हो सकता है. देखो मेरा मतलब वही था जो आप समझ रहे हो.
है ना। अब किसी और का नाम है तो उसका पूरा एड्रेस जाएगा, उसका पेन नंबर, उसका मतलब फादर नेम जाएगा, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जाएगा। ओके सर, व्हाई दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर टेकन इन द लॉ? विच वर्ड की बात कर रहे हैं आप बच्चे मेरे? A person can be designated partner of how many LLPs? Any number. इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक तो मेरे हिसाब से। सर MOA AOA is also in LLP? No, in LLP there is partnership deed. Sir, can you tell what all types of business can be LLP? Any type of business should be legal business. Sir, will you provide any chart for quick recap? Summary दूंगा ना इसके बाद, don't worry. चलिए, liabilities of designated partner section 8. Unless expressly provided, otherwise provided in this act, a designated partner shall be responsible for all the acts, matters, and things as are required to be done by LLP in respect of compliances of the provision of this act, including filing of any document, written sorry, statement and like report pursuant to the provisions of this act and as may be specified in LLP agreement, right? And liable to all the penalties imposed on LLP for any contravention for those provisions. कि भैया जो लाइबिलिटी, जो काम एलएलपी करने हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और जो लाइबिलिटी, गलत काम करने की लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर। गलत इंफॉर्मेशन भेज दी आपने, हु विल बी लाइबल? डेजिग्नेटेड पार्टनर। एलएलपी ने थोड़ी भेजी इंफॉर्मेशन, भेजी तो डायरेक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं ना, तो दे विल बी लाइबल, राइट? Changes in designated partners, section 9. An LLP may appoint a designated partner within 30 days of the vacancy arising for any reason, and the provisions of section 7 subsection 4 and section 7 subsection 5 shall apply in respect of such new designated partners, provided if no designated partner is appointed or if any time there is only one designated partner, each partner shall be deemed to be the designated partner. यानी कि आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट ही नहीं किया, या किया तो केवल एक है, दो नहीं है। जितने पार्टनर्स है ना, सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे, यानी सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। All partners will be considered as designated partners if there is no designated partner in the LLP or only one designated partner in LLP, right? और अगर आप नया चेंज करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको चेंज, ठीक है? These are the penalties in contravention of section 7 and 8. क्या कहता है सेक्शन 10? अगर आपने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, दो पार्टनर, नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी 2 और मोर, और ठीक है, और 1 शुड बी द रेजिडेंट। अब 2 से कम पार्टनर है, या दोनों के दोनों पार्टनर कौन है? नॉन रेजिडेंट है, तो एलएलपी पेनल्टी कितनी आएगी? 10,000 प्लस 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। 100 रुपये पर डे चलता रहेगा, मीटर घूमता रहेगा, 1 लाख पे आके मीटर बंद हो जाएगा। और पार्टनर पे भी लगेगी भाई, एलएलपी पे तो लगेगी, पार्टनर्स पे पर्सनली पेनल्टी लगेगी, 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 50,000। If LLP contravenes the provision of section 7 subsection 4, failure to file the consent of appointment of designated partner within 30 days, आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बना लिया लेकिन उसकी कंसेंट आपने सबमिट नहीं की आरओसी में, एलएलपी पेनल्टी कितनी? 5,000 प्लस 100 रुपये पर डे अप टू 50,000। एवरी पार्टनर 5,000 plus 100 rupees per day subject to maximum
25,000, अरे मिनिमम 5 ईयर तो लगने ही लगने हैं। If LLP contravenes in section 7, section 5 and section 9, penalty वही जो subsection 1 में 10,000 plus 100 per day subject to maximum 1 lakh, penalty 10,000 plus 100 per day on partner subject to maximum 50,000. So mutatis mutandis means as it is, which is given that as it is in this point. Okay. Sir, if any one of the partner have to come out from LLP as per the partnership agreement. ठीक है, चलिए. Mr. Mohammed is asking, sir, in case of private company, then mention the company name as private limited in case of LLP. Is there any suffix? Wait, beta, I will reply your answer in some slides. Just wait. Sir, can a partner of the partnership can become a designated partner? देखिए, designated partner कौन होगा? That is section 7 बताता है कि 2 designated partner चाहिए जो responsible होंगे, right? Sir, designated partner can be the member of other private company. Yes, maybe. देखिए, मिस्टर धर्म सिंह, सर व्हेन शुड बी प्रेफर कंपनी टू क्लाइंट एंड नॉट एलएलपी? देखिए, मेरी अपनी सोच है कि मैं क्लाइंट को कहता हूँ भाई आपके लिए बेटर है एलएलपी. ठीक है, ये आप अपना देखते हैं कि किसको कौन सी चीज बेटर लग रही है. मेरे हिसाब से एलएलपी इज इजी वर्जन. सर, एनी लिमिट इन अमाउंट टू फॉर्म ए एलएलपी? नो लिमिट. Sir, is designated partner personally liable for any act of LLP? I have discussed penalties. I have discussed. Sir, as per book section 7, 9, section is 7 and 9, not 8. कहीं पर मेंशन होगा, एक बार देख लो बच्चों. सर, जिस दिन राहुल इज आस्किंग, सर जिस दिन पेनल्टी 1 लाख तक पहुंच जाएगी तो पेनल्टी उसी दिन पे करनी पड़ेगी और या और दिन मिलेंगे? नहीं, पेनल्टी तो मैक्सिमम 1 लाख की. अगर आप कंटिन्यू करते हैं तब भी कंटिन्यू और दिन आगे चले जाते हैं, आप नहीं अपॉइंट करते हैं, नई इंफॉर्मेशन देते हैं, डेनियल पार्टनर अपॉइंट नहीं करते हैं. सर, कैन ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप बिकम डेनियल पार्टनर? यस. सर, कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस इन डेजिग्नेट पार्टनर? चेंजेस मीन पार्टनर अगर आ रहा है तो आप आएगा, उसको इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म करना थी, कंसर्न भेजनी है. एज पर द एग्रीमेंट यू द पर्सन कैन बी एंटर एज ए डेजिग्नेट पार्टनर. सर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी? फिर आगे चल दिए आप एक कदम. ब्रेक के बाद बिल्कुल वही डिस्कस करना है, बट बिफोर ब्रेक वी कम फॉर ए पेनल्टी शूट आउट. आज हमारा सुपर ओवर नहीं है, आज पेनल्टी शूट आउट. रेडी फॉर इट? रेडी हो क्या बच्चों? बताओ फटाफट से आगे चले. सारे आंसर्स एक बार में भेजने हैं. प्लीज सेंड ऑल आंसर इन वन शॉट. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, when did the LLP Act 2008 come into force? 1st April 2008, 31st March 2009, 1st May 2009, 23rd April 2008. A LLP shall be governed by the provisions of Companies Act 2013,
LLP Act 2008, Cooperative Society Act 1912, Indian Partnership Act 1932. ये तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि फाउंडेशन बच्चा भी दे सकता है. नेक्स्ट. A limited liability partnership is not a separate entity from that of its partners. A legal entity separate from its partners. Body corporate. Only B and C are correct. मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरी गुड़ियाओं, डोंट सेंड द आंसर वन बाय वन. बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे मेरे सामने पढ़ने के लिए. एक बार में भेजना. नेक्स्ट. Which section of LLP Act 2008 deals with the minimum number of partners? 7, 4, 6, 9. Whether a HUF can become partner in LLP. HUF may become partner of LLP provided the registrar may grant permission in this behalf. No, HUF can't become partner in LLP. Yes, HUF may become partner of LLP. None of the above. How many designated partners are required in LLP? At least 2 designated partners, 7 designated partners, 2 designated partners, at least 7 designated partners. You have to select the best one. चलिए भेजिए अपने आंसर फटाफट से. इसके बाद ब्रेक रखेंगे 10 मिनट का और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे. टॉपिक मतलब आज का दिन खत्म करेंगे. टॉपिक तो नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा बच्चों. आंसर्स तो आ गए मेरे पास, तो चलिए मैं भी शुरू करूं बताना आपको आंसर्स. आप लोग इंतजार कर रहे हो कब सर्च से छुटकारा मिलेगा, कब ब्रेक देंगे सर. विच डेट. अरे डेट क्यों चल रही भाई. द आंसर इज 31st March, right? LLP Act. B and C are correct. Section 6. No, HUF cannot be. And last question. At least 7. At least 2, sorry. So who is the lucky one?
First one is Mr. Rito Banerjee. Congratulations. Second one, इतना तो आसान टेस्ट था आज बच्चों का, एक आंसर गलत आ रहा है. नेक्स्ट वन इज मिस दिव्या कुमारी. कॉन्ग्रेचुलेशन. मिस्टर मनीष कुमार. कॉन्ग्रेचुलेशन. मिस्टर मनोहर यादव. मिस स्वाति पांडे. चलिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन ऑल द करेक्ट आंसर्स. चलिए, तो यहाँ पर अपन ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का. नाउ द 7:33. तो वी विल मीट एट 7:43. राइट. तो इसको खत्म करेंगे. चल, टेक्निकल सपोर्ट से
ओके ओके, वेलकम बैक। बहुत अच्छे आ जाए, एक छोटी सी क्वेरी, एक बच्चे की क्वेरी थी रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ एंटिटी। एक बार प्लीज दोबारा भेज देना बच्चे क्वेरी। चलिए स्टार्ट करें। तो इन नेक्स्ट 1 आवर we will discuss the incorporation of LLP. Section 11, incorporation. First heading, subscription of names. Section 11, subsection 1, clause A. Two or more persons. कितना? Two or more, at least two. Associated for carrying on a lawful business. Which business? Lawful. Unlawful business नहीं चलेगा. लॉफुल बिजनेस विद द व्यू टू प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए शेल सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एटलीस्ट टू नेम शुड बी सेंड फॉर द डॉक्यूमेंट. बिजनेस शुड बी लॉफुल एंड फॉर अर्निंग द प्रॉफिट. क्लियर? Filing of documents. These corporation documents shall be filed with the registrar of that state in which state your company is, your LLP is going to be established. जिस स्टेट में, जिस स्टेट में आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफिस है, in that office you have to submit your document with the prescribed fees. Now, incorporating documents are processed electronically online by Registrar Central Registration Center since 2nd October 2018 से. 2018 से अब सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होने लगा है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं. सर क्या हम आज केस स्टडी भी करेंगे? नहीं, केस स्टडी नहीं करेंगे बेटा, आज तो केवल यही डिस्कस कर रहे हैं, बीच में एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. ठीक है. सी पॉइंट, क्लॉज सी, कंप्लायंस स्टेटमेंट. ये इंपॉर्टेंट. someone of you ask, sir, what is the role of CA? Here the role of CA. A compliance statement in the prescribed form shall be filed along with the incorporation documents. A compliance statement you have to submit the form prescribed in the rules, which should be signed by either advocate or a company secretary or a chartered accountant or a CWA, cost and work accountant, who is engaged in the formation of LLP, and by one anyone who subscribe his name to the incorporation document. Means anyone who subscribe the name, which means the person who are going to be the partner of LLP, who has given their two names. ये यहाँ पे we have mentioned ना, जो दो लोग थे जिन्होंने अपना नाम दिया था इनकॉर्पोरेशन के लिए, राइट, उनमें से एक साइन करेगा एंड वन चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या CWA या एडवोकेट साइन. what is authorized, what they are signing, that they are stating that all the requirements of this act, all the एक सेकंड बच्चों, all the requirements of this act means LLP act, and the rules made thereunder have been complied with in respect of incorporation matter precedent and incidental thereto. मतलब सिंपल लैंग्वेज में, a professional or a proposed partner will check the document and certify that all the requirements have been fulfilled in filing the documents regarding the incorporation. एक जो पार्टनर बनने जा रहा है उनमें से एक आदमी और एक प्रोफेशनल, वो चेक करेगा कि जो रिक्वायरमेंट है LLP एक्ट में इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, वो सारी पूरी कर ली गई हैं या नहीं कर ली. राइट.
Mr. Prabir Datta is why advocates are authorized? Because they are also legal person. They are authorized by government. Content. The incorporation document shall be filed in form number 2. And what are the contents in form number 2? Name of proposed LLP, proposed business of LLP, address and registered office of LLP, name, address of each of the person who are to be partners of LLP, proposed partners, उनके नाम और पते, name, address of the person who are to be the designated partners, उनके नाम और पते, and such other informations as required by the rules. क्या क्या होगा इसके अंदर? फॉर्म 2 फॉर इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म 2 रिमेंबर लर्न कर लीजिए इसको. फॉर्म 2 नेम ऑफ एलएलपी, business, address, registered office, registered and name and address of the partners and designated partners or other information as required by the law. फाइन फॉर मेकिंग फॉल्स कंप्लायंस स्टेटमेंट, आपने गलत स्टेटमेंट साइन कर दिया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो व्हाट इज द पेनल्टी ऑन यू? If a person makes a statement as discussed above which he knows to be false, आपने जानबूझ के गलत किया है, and does not believe it to be true, and you know you don't have the faith on the document, then you are punishable with imprisonment up to 2 years and fine up to 10,000 to 5 lakh. Minimum 10,000, maximum 5 lakh. यानी कि 2 साल तक रहने खाने का इंतजाम गवर्नमेंट करेगी और पेनल्टी भी लगाएगी. ठीक है. LLP identification number. The registrar shall maintain a register of LLP in which names of LLP will be entered in that order, sequence in which they are registered. And every registration number which is allotted, assigned to LLP is called LLPIN. LLP Limited Liability Partnership Identification Number. Right? चलिए क्वेरी जब तक, नेक्स्ट स्लाइड से पहले इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 12. सेक्शन 12 क्या कहता है? इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन. एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों. Sir, can you please provide the exam relevant question? Beta, this is the first time in C LLP will be asked. So, full chapter is important according to me. ठीक है, जो ज्यादा लगेगा वो वेटेज में आपको मेंशन कर, पर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल. ठीक है ना. जो अंकुर इज आस्किंग, जो सीए, सीएस, एडवोकेट और सीडब्ल्यू साइन करेंगे उसका पार्टनर होना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं. दो, जब आप डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन कराते हैं तो 2 नाम भेजेंगे, 2 पार्टनर होने चाहिए ना. जो पार्टनर बनेंगे इनकॉर्पोरेशन के बाद उनमें से एक साइन करेगा. राइट. सर, सब्सक्राइबर और ए प्रोफेशनल कैन बी द सेम. आई थिंक 2 डिफरेंट पर्सन शुड बी देयर. मे बी द सेम नहीं, आप 2 अलग होने चाहिए वो पर्सन. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं एंड आई एम गोइंग टू बी द पार्टनर इन एलएलपी, तो 1 अदर प्रोफेशनल शुड बी देयर. So, role of registrar, what will registrar do when the requirement of section 11 have been complied with? यानी कि आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, you have filed all the documents as per section 11, then the registrar shall retain the incorporation document and within 14 days, please mark, within 14 days, register the incorporation and give a certificate that LLP is incorporated by the name specified therein. यानी कि within 14 days of submission of document, the registrar has to register the LLP and give the certificate of registration, incorporation.
Compliance statement, the registrar may accept the compliance statement delivered under section 11. Compliance statement signed by partner or professional as sufficient evidence that the requirement as to the subscription of name has been complied. हाँ भैया बचा लिया गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने क्या कहा, लॉ मेकर्स ने क्या कहा कि कंप्लायंस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट एविडेंस कि रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन हैज बीन डन. इट मींस गलती हुई तो तुम फंसोगे भैया, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं. ठीक है ना, क्लियर इतनी बात. सिग्नेचर ऑफ सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट इशूड, सर्टिफिकेट ऑफ incorporation of LLP, registration certificate shall be signed by the registrar of companies and authenticated by the official seal of the government of the department. And this certificate is the conclusive evidence that LLP is incorporated by the name specified on the certificate. यानी कि अब वही नाम है जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ. ठीक है भाई. Registered office of LLP and change therein. Section 30. Every LLP shall have a registered office to which all communications and notice may be addressed and where they shall be received. हर LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पर नोटिस भेज सके, सारे कम्युनिकेशन कर सके. And a document may be served. May serve मतलब serve means reached. Issued means send करना. Listen carefully. Document issued means send and serve means reach to the recipient. A document may be served on a LLP or a partner or the designated partner thereof by sending it by the post under a certificate of posting. यानी कि एक डिपार्टमेंट का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वहां एक फैसिलिटी है कि आप जो चिट्ठी भेज रहे हो उसको मोहल्ला आके देखते हैं कि हाँ आपने पोस्ट कर दी. और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर प्रेस्क्राइब मैनर. Prescribed manner means prescribed by the rules at the registered office or any other address specifically declared by LLP for the purpose in the prescribed form and manner. Means registered office or correspondence address which was submitted by the LLP. Clear इतनी बात. Third point, LLP may change the place of registered office. You want to change your registered office? Yes, you can do. File the notice of such change with the registrar of companies in such form and manner as the prescribed by the rule. Simple सी बात है. आपको अगर चेंज करना है बिल्कुल करिए. आप इंफॉर्मेशन दीजिए रजिस्ट्रार को कि भैया उन्हें भी तो मालूम पड़ा है कि आपका ऑफिस कहाँ है. And if LLP contravenes any of this provision of this section 1, 2, 3 किसी का भी आप गड़बड़ करते हैं सब सेक्शन में तो पेनल्टी विल बी 500 रुपीज टू मैक्सिमम 50,000. 500 रुपए पर डे से स्टार्ट होगी, कितनी हो जाएगी 50,000 रुपीज. ठीक है. अभी क्वेरी आई है आपकी two CA incorporating their LLP would be needing another CA or advocate other professional to sign incorporation document. Actually, he want to ask that two CAs are incorporating LLP. Then why should need another professional? Another professional means independent professional. आप अपने डॉक्यूमेंट तो हमें सही बताओगे ना भाई. इंडिपेंडेंट ऑफिसर को चेक करना है, एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को चेक करना है whether documents are right or not. The definition of LLP is inclusive or exhaustive. I think काफी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं हम. What is the weightage of this chapter? Weightage is not clarified by the institute. As per my opinion, the question around should be 10 to 12 marks from this chapter or maybe higher side. ज्यादा भी हो सकता. ठीक है ना. MCQ भी तो आने हैं आपके. Effect of registration section 14.
After registration, what are the effect of this certificate? On registration, LLP shall by its name be capable of being sued and being sued. इसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं. And this LLP can file the suit in its name. Acquiring, owning, holding, or developing or disposing of property, whether movable or immovable, tangible or intangible. ठीक है. प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है LLP. Having a common seal, doing and suffering, करना और भुगतना, such other acts and things as body corporate में lawfully do and suffer. वो सारे काम कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली कर सकती है. Section 15, name. One query from your side. Sir, LLP identification number is given in the LLP certificate. Yes. Sir, it is mandatory to remember all the punishment that is amount for the contravention because we have around 15 chapters. Listen, in my opinion, if you can learn all the penalty provision, that's good. If you are not sure in the examination hall what should be the penalty, so don't write the wrong answer. You may write penalty as prescribed. Penalty as prescribed. ठीक है. Penalty provisions as prescribed will be applicable. या prescribed penalty provisions will be applicable in my view. Sir, ROC is a personal department. ROC is authority, register of companies. ठीक है. नेम सेक्शन 15. एक क्वेरी थी आप लोगों में से कि सर व्हाट शुड बी द सफिक्स, तो ये आ गया. Every LLP shall have either the words LLP limited liability partnership or acronym LLP as the last word of its name. यानी कि आपको LLP नाम को LLP पूरा limited liability partnership या LLP, for example ABC and company LLP, ABC limited liability partnership, ये ऐड करना पड़ेगा. No LLP shall be registered by the name which, in the opinion of central government, in national level, is undesirable or identical or too nearly resemble to that of any other LLP or a company or a registered trademark. यानी गवर्नमेंट को लगता है ये नाम सही नहीं है या वो किसी LLP या कंपनी या ट्रेडमार्क से मैच करता है, तो वो नाम LLP को नहीं दिया जाता. Reservation of name, section 16. A person may apply in form number 1 and manner and with the fee to registrar for the reservation of a name set out in the application as name of the proposed LLP or name to which a LLP proposes to change its name. मतलब आपको नाम रिजर्व करना है कि मुझे लग रहा है या मेरे को ये नाम अच्छा लग रहा है, पर पंडित जी ने मोहलत दिया है कि 2 महीने बाद इस पे काम कर, तो मैं क्या करूंगा, इस नाम को रिजर्व करा लूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने नाम 2 महीने तक नहीं अभी रजिस्टर नहीं कराया तो कोई और ना करे. या मेरी LLP कोई नाम है, I have LLP with a particular name but I want to change, but after 2 months then I can get the reservation of the name. A person may apply in form number 1 and manner with the fee to registrar for the reservation of name set out in the application as name of the proposed LLP or the name to which LLP proposes to change its name. And upon receipt of an application and non-payment of prescribed fees, the registrar may, if he is satisfied, subject to the rules prescribed by the central government in the matter that the name to be reserved is not one which may be rejected on any ground, refer to subsection 2 of section 15. Resembles. Reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by the. आपको नाम रिजर्व कराना है, आप फीस पे कीजिए और नाम आप रिजर्वेशन करा सकते हैं 3 महीने की. पर नाम की रेस्ट्रिक्शन वही जो सेक्शन 15 में कहा गया है, इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिसेंबल विद दैट ऑफ LLP, अदर LLP और कंपनी और रजिस्टर्ड. ठीक है.
चेंज ऑफ नेम LLP। एक सेकेंड। चलिए, यू वॉन्ट टू चेंज योर नेम ऑफ LLP। लगता है पार्टनर्स को कि ये नाम की वजह से बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आपसे कि आपका जो नाम है वो मैच कर रहा है। डिपार्टमेंट हैज इन्फॉर्म यू that your LLP's name is nearly resembles or identical with that of other company, other LLP or trademark. If the name of LLP is identical with or too nearly resembles to that of any other LLP or a company or a registered trademark of a proprietor under the Trademarks Act 1999, then on the application of such LLP, अब इस सच LLP का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच LLP? दैट LLP टू विच योर LLP's नेम इज मैचिंग। ये वो LLP है जिसके नाम के साथ आपका नाम मैच कर रहा है, बट वो LLP आपसे पहले बनी है, आपने बाद में बनाई है। उसने अप्लाई किया कि सर आप ये जो LLP नई बनी है हमारे बाद, इसका नाम हमारी LLP से मैच कर रहा है। और प्रोप्राइटर इन केस ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है, और एक कंपनी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट may direct that such LLP should change its name within a period of, this is important, period of 3 months from the date of issue of such direction by the central। किसी LLP ने, किसी कंपनी ने या किसी ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर ने has informed the ROC, sir, this name of new LLP is too nearly identical to our name, and central government will check, and if it is satisfied, then issue the direction to change the name, and then you should change within 3 months. You should change within 3 months from the date of direction, provided that an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable within 3 months, within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or the change of name of LLP under the same। यानी अगर ट्रेड नेम का केस है तो जो आपकी LLP है, if in case of trademark, the claim of trademark is acceptable up to period of 3 years from the date of incorporation of your LLP। यानी कि आपकी जो LLP है उसका नाम मैच कर रहा है किसी ट्रेडमार्क से जो पहले से है, तो उस ट्रेडमार्क को ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने कि आपका 3 साल है, 3 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं चेंज करने के लिए। 3 साल कब से काउंट होंगे? जिस समय से आपकी LLP इनकॉर्पोरेट की गई, जिस समय से आपकी LLP इनकॉर्पोरेट की गई, ठीक है। LLP shall within 15 days give notice of the change to registrar along with the order of central government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation, and within 30 days of such change in the certificate of incorporation such LLP shall change its name in LLP Act। क्या कहा? LLP ने 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देगी चेंज होने के बाद, ठीक है, कि भैया 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगी चेंज के बाद कि हमने नाम चेंज कर लिया है, और चेंज के 30 दिन के अंदर, चेंज के 30 दिन के अंदर ROC सर्टिफिकेट जारी करेगा। Who shall carry out listen, LLP shall within 15 days give notice to change to the registrar along with the order of central government, who shall carry out the change in certificate of incorporation, and within 30 days of such change in the certificate of incorporation, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर LLP को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे अपने जो होल्डिंग्स है सब में नाम चेंज करना पड़ेगा। प्लीज रीड पॉइंट नंबर 2 वंस अगेन।
ठीक है। If LLP is in default in complying with any direction given under subsection 1, the central government shall allot a new name of LLP and registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of old name and issue a fresh certificate of incorporation. मतलब एलएलपी चेंज ही नहीं कर रही है अपना नाम, इन्फॉर्म इसको डायरेक्शन दिया गया, इवन आफ्टर गिविंग द डायरेक्शन टू चेंज द नेम बाय आरओसी, एलएलपी इज नॉट चेंजिंग इट्स नेम, then central government allot a new name to LLP and register issue the certificate of incorporation with new name. But one thing is allowed after this certificate of registration, you are allowed to change the name, but not the same name. And if you have to follow the provisions of subsection 2 of section 50. क्या कहा इस पॉइंट में कि भैया डायरेक्शन दिया गया फिर भी चेंज नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का ठीक है मत करो, हम ही तुम्हें नाम दे देते हैं, पर आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, बाद में चेंज कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 15(2) के प्रोविजन नहीं भूलोगे आप, 15(2) को तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां तक क्वेरी आपकी। स्टेप्स क्या हुई, पहले नाम रिजर्व कराना है, फॉर्म 2 में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और एलएलपी का एग्रीमेंट सबमिट करना है फॉर्म नंबर 3 में। तो क्या बात करते हैं अपन, आपकी क्वेरी है सर, आफ्टर चेकिंग बाय सीए एंड इफ देयर फाउंड एनी फ्रॉड स्टेटमेंट देन सीए विल बी लायबल, डेफिनेटली यस, आपको चेंज करना है। सर एक एलएलपी के अंदर से दूसरी एलएलपी क्रिएट हो सकती है, कैसे? एलएलपी पार्टनर हो सकती है दूसरी एलएलपी में। ये दिव्या को आज बहुत हंसी आ रही है बिटिया को, इसको बहुत हंसी आ रही है आज। ये हंसना अच्छी बात है, बुरा बुरी मानने वाली बात नहीं, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ बिटिया। सर फ्रॉम, राहुल क्या कह रहे हैं, सर फ्रॉम वेयर टू चेक इफ द नेम ऑफ एलएलपी ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप उस पर जाएंगे ना, पोर्टल पे जाके चेक करेंगे नाम, तो ऑटोमेटिक बता देगा आपको। हाउ विल वी नो दैट ए नेम सेलेक्टेड बाय अस इज चूजन बाय समवन एल्स, वही मैं कह रहा हूँ, मेरीन भी यही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब अप्लाई करेंगे नेम को, तो देखते हैं नाम, हम चेक करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, तो मालूम पड़ जाएगा आपको कि वो अवेलेबल है या नहीं। अगर नाम कोई और मैच कर रहा होगा तो नाम आपको अवेलेबल नहीं होगा। सर ट्रेडमार्क में रजिस्टर फॉर दैट ट्रेडमार्क, मैं समझा नहीं बेटा, विशाली आई एम नॉट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू आस्क। सर इफ इन कॉर्पोरेशन फॉर्म details are wrong and not complete, then penalty provisions are there। आपने कंप्लायंस फॉर्म डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं भरी, आपको कंप्लायंस स्टेटमेंट इसी बात का देना है। प्रशांत भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, प्रशांत भाई साहब इज आस्किंग सर, कॉर्पोरेशन सोल कैन नॉट बी द पार्टनर इन एलएलपी, who will be the corporation sole, corporation देखिए, it may be OPC, no, OPC तो कंपनी हो गई, कंपनी अंडर सेक्शन 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं। Does LLP can be partner in other LLP? Definitely, because body LLP is body corporate and it can be the partner in LLP। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी कहानी थी। नींद तो नहीं आई, बताओ पहले, अभी तो टाइम है हमें बात करने के लिए। नींद तो नहीं आई किसी को? जवाब तो दो बच्चों। और क्वेरी पूछो जब तक, मेरी क्वेरी का जवाब दो। नींद तो नहीं आ रही किसी को? तो एक कहानी सुनाऊंगा, इससे नींद कभी नहीं आएगी। नहीं आई सब। नेहा कह रहे सर हम एक्टिव है, अंकुर कह रहे नहीं आ रही सर नींद, नींद कुछ नहीं आ रही। वैशाली को प्रॉब्लम है एक पॉइंट में, 3 ईयर वाला पॉइंट इन ट्रेडमार्क। ओके वैशाली देखो, कह रहा है कि देखिए आप
कि आपको फॉर एग्जांपल आपके पास एलएलपी है, आपने एलएलपी बनाई, और मुझे मालूम पड़ता है यार मेरी एलएलपी पुरानी है, ये एलएलपी नहीं बनी है, और मेरी एलएलपी का जो नाम है वही लगभग इस एलएलपी का नाम। ठीक है, सेम फॉर ट्रेडमार्क। तो मुझे 3 साल का टाइम है आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, कि मैं 3 साल तक आप पे आरओसी को इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि भैया देखो मुझे नहीं मालूम पड़ा, 2 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए, अब मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा जो ट्रेडमार्क है उसका नाम और इनका नाम मैच कर रहा है, तो कृपया आप इसको चेंज कर दीजिए। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है। नैन्सी बिटिया को नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, वेरी गुड। चलो अभी सुनाता हूँ कहानी, सीधी उड़ जाएगी। सर, कैन टू एलएलपी बी कंबाइंड? कंबाइंड मीन्स किस फॉर्म में करेंगे आप कंबाइंड? एलएलपी एलएलपी बनाएंगे तो 2 एलएलपी पार्टनर हो गई। नेहा कह रही है सर नहीं सर, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, हम एंजॉय कर रहे हैं, वेरी गुड। सर बिना कुछ खाए कैसे नींद आएगी? ये बात तो बहुत, बेचारा मेरा आज तक कुछ खाया नहीं है बेटे ने, हमारे प्रिंस ने। सर अनमोल इज सेइंग सर इट विल बी बेस्ट इफ ऑल लेक्चर्स आर टेकन बाय यू। अरे एवरीवन इज एक्सपर्ट। तनु, तनु सेइंग सर आप पढ़ाओ और नींद आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, वेरी गुड। हाँ वो कह रहा है, मेहरीन का है सर मुझे एक स्टोरी सुननी है, वो जो आप कह रहे थे, चलो पहले स्टोरी सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर बचपन में ना हमारे यहाँ कथा होती थी घर में, तो पंडित जी आते थे कथा करने, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। अब वो कथा इतनी बोरिंग होती थी ना, हमें नींद आ जाती थी, बच्चे थे हम। अब वो एक बार तो झपकी सी लगने लगी, तो पंडित जी ने कहा मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद तुम्हें कभी जीवन में कथा में नींद नहीं आएगी। और ये कहानी जैसे मैंने सुनी, और मैंने वो कहानी नोट करी और आगे अपने बैचेस में बच्चों को डालनी शुरू की। कहानी सुनो कि जब लंका में भगवान राम ने रावण को मार दिया, लंका को जीत लंका को जीत लिया, तो विभीषण का राज्यभिषेक चल रहा था, राज तिलक चल रहा था। तो जब भगवान राम हवन करने बैठे, तो एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। ठीक है। अब प्रभु बड़े चिंतित हुए, भगवान बड़े चिंतित हुए कि अब तो लंका में रावण मर गया, अब तो शांति होनी चाहिए, कौन है दुखी, किसको कष्ट हो रहा है। तो वो जब देखने गए तो मालूम पड़ा कि लंका के दरवाजे पे एक वृद्ध महिला रो रही थी। वृद्ध महिला रो रही थी। तो प्रभु ने पूछा, भगवान राम ने पूछा, माता आप कौन है, क्या कष्ट है आपको? तो माता ने कहा, प्रभु मैं निद्रा देवी हूँ, जब तक यहाँ पर कुंभकर्ण था मेरे को वो स्थान था, मेरे पास राज था, मेरे को स्थान मिला था। अब कुंभकर्ण को आपने मार दिया, अब मुझे भी स्थान चाहिए, मैं कहाँ जाऊं? तो प्रभु ने कहा, माता मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में जहां पर धर्म की, ज्ञान की बात हो रही हो, कलयुग में जहां पर धर्म की, ज्ञान की बात हो रही हो, वहां पर जितने दुष्ट प्रकृति के लोग बैठे हों उनके सिर पर सवार हो जाना। ठीक है। तो अब इस कहानी के बाद तो किसी को नींद आती नहीं है, सब ऐसे आंख खोल खोल के देखते हैं। सर इज फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी सेम एज एलएलपी? नहीं, ओपीसी इज समथिंग डिफरेंट। सर मैं क्वेश्चन माय क्वेश्चन रिगार्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन अदर कॉर्पोरेट, थर्ड पॉइंट। ठीक है। देखिए अगर कोई ऐसी स्वाति इज आस्किंग सर माय क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बॉडी कॉर्पोरेट which are not included in any other corporate, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट डेफिनेशन थी कि एक्सक्लूडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो नहीं हो सकती पार्टनरशिप। व्हाट इज वध? वध मतलब मार देना। वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ी औरत, वृद्ध महिला। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार?
चलिए, जब भी नींद आए तो मेरी कहानी याद करना, बट दिस टाइम इज फॉर पेनल्टी शूट आउट 2। और नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, परमिशन ग्रांटेड। अरे बताओ मेरे लाडलो, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, the incorporation document shall be in form 1, 2, any of the above, none of the above. Second point, when the requirement of section 11 have been complied with, the registrar shall give incorporation certificate within 7 days, 10 days, 14 days, 30 days. Fine for making false compliance statement under section 11, 1,000 to 1 lakh, 10,000 to 5 lakh, 10,000 to 10 lakh, none of the above. Section 12 of LLP Act deals with incorporation by registration, LLP to be body corporate, reservation of name, partner as agent. Next, which form is filed for reservation of name? Form 1, 2, any of the above, none of the above. And 6, central government may direct such LLP to change its name, and LLP shall comply with the said direction within a space after the date of the direction or such longer period as central government may allow. 1 month, 3 months, 6 months, 9 months. चलिए क्या करें बच्चे मेरे। राहुल इज सेइंग सर आपने तो मोई मोई कर दिया सबका। प्रिंस आपने तो हमारा पोपट कर दिया, अरे वाह। और क्या कह रहे हैं। अंकुर कह रहा है बेटा मेरा, वाह सर क्या कहानी आपने सुनाई है, अब तो किसी को क्लास में नींद ही नहीं आएगी। वेरी गुड। दिव्या कह रही है हमारी बिटिया रानी, अब तो नींद क्या, नींद का नाम भी याद नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन है मिस्टर केशव का, कैन ए एलएलपी बी ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म? यस, मे बी। चलिए वो आंसर आने शुरू हो गए, अपन वापस आते हैं। जाना नहीं जब तक मैं ना कहूँ क्लास छोड़ के, पाप लगेगा। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, फॉर्म नंबर 2, डेज 14 days. Fine for making false compliance statement, 10,000 to 5 lakh. Section 12 deals with incorporation by registration. Which form is filed for reservation? Form 1.
and it is 3 months. ठीक है, बट अभी खत्म नहीं हुई क्लास का। नाम देखो पहले कौन कौन सही आया आपके। फर्स्ट इज मिस्टर प्रिंस, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा जी। नेक्स्ट वन इज मिस ज्योति, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। मिस्टर माधव तिवारी, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। मिस्टर श्रीनिवासन वेंकटरमन, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। मिस प्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मिस आनंदिता, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिस नेहा बिटिया क्या कह रही हैं हमारी, सर अगर आप ऐसे बोलोगे पाप लगेगा, तो अब तब तक बोलोगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहना ये था, अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, तो एक बार रिवाइज कर ले फटाफट से। बताओ, परमिशन ग्रांटेड, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट से स्टार्ट करें, 5 मिनट में खत्म कर लेंगे रिवीजन। चलिए, देखिए एप्लीकेबिलिटी एलएलपी एक्ट की फ्रॉम 31 मार्च 2009 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कंटेंट 81 sections and 4 schedules. First schedule for mutual rights and duties of partners. Second schedule for conversion of firm into LLP. Third schedule Third schedule conversion of a private company into LLP. Fourth schedule conversion of unlisted public company into LLP. नॉन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 4 क्या कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एलएलपी। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एलएलपी, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, separate legal entity, limited liability of partners, alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and the flexibility of partnership. And meaning partner section 5, any individual or body corporate, individual body corporate may be the partner LLP but not person of unsound mind, undischarged insolvent or who has applied to be adjudicated as insolvent. Minimum partners 2, if LLP carries on the business for more than 6 months for only one partner, he shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred during that period. What are the characteristics? It is definitions. Body corporate, section 2, clause D, subsection 1. A company and includes LLP, foreign LLP, foreign company, but does not include corporation sole, cooperative society, and any other body corporate notified by the central government. Business, every trade, profession, service, and occupation except any activity which the central government may by notification exclude. Designated partner, any partner designated as per section 7. Entity, any body corporate includes a firm set up under Indian Partnership Act. Includes a firm set up under Indian Partnership Act for specific sections, right? Only, not for everything. Foreign LLP form incorporated outside India but having the place of business in India, financial year 1st April to 31st March. But if LLP is incorporated after 30th September, then financial year may end on the 31st day of March of next following year. LLP means LLP partnership formed under this act, LLP agreement, that is written partnership deed,
partner, any person who becomes a partner according to the agreement. A small LLP, contribution up to 25 lakh or such higher amount as prescribed, but up to 5 crore. And turnover for the immediately preceding financial year up to 40 lakhs or such higher prescribed amount, but up to 50 crores. Or which fulfills such terms and conditions as may be prescribed by the rules. Designated partners, at least 2 designated partners who are individual, and at least one of them should be the resident in India. Resident means who is in India for 120 days at least. Okay, in immediately preceding 1 year. Characteristics: LLP is body corporate, perpetual succession, separate legal entity, limited liability of partners, mutual agency, LLP agreement, maximum minimum 2 partner, no limit for maximum, business for profit only, no charitable purpose, artificial legal person, it may be the common seal, not compulsory, management of business by the designated partners, conversion into LLP of partnership firm, private limited company, and unlisted public company. Investigation rights with central government, compromise and arrangement as per the Act, foreign LLP, and e-filing of documents. What are the advantage of LLP? It is easy to form. LLP agreement can be customized, मतलब change कर सकते हैं accordingly. Operates on the base of agreement, no minimum capital requirement, less compliances and tax burden, flexibility regarding the addition of capital, and limited liability of the partners. Dissolution procedures are easy. Incorporation of LLP, subscription of names by 2 or more persons, filing of document with the registrar with prescribed fees, compliance statement in the prescribed form, made by either an advocate or company secretary or chartered accountant or a CWA or any, and by anyone who subscribes his name. Contents of incorporation documents: name, proposed business, address of LLP, name and address of each of to be partner and designated partners, other prescribed information. Prescribed means prescribed by the rules. And within 14 days from the date of submission of documents, our registrar will issue the certificate of registration, incorporation certificate. Registered office and change in therein. Every LLP shall have registered office. A document may be served by sending it by post at the registered office and any other address specifically declared for communication. In case of change of a place of registered office, notice shall be filed to registrar, and penalty is 500 rupees. 500 rupees each day, subject to maximum 58,000. एक सेकंड, एक बच्ची क्वेरी आई है. तो ये 5 करोड़ रुपीस फॉर कैपिटल, ये मिस्टर मेरीन खान साहब पूछ रहे हैं. 5 और 50, 5 फॉर कैपिटल एंड 50 फॉर टर्नओवर. Name, use the words limited liability partnership or LLP as the last word of the name. No LLP registration by name which is in the open central government is undesirable, identical or too nearly resemble to any other partnership firm or LLP or a company or registered trademark. Change of the name, if the name is identical or nearly too resemble to any other partnership or LLP or company or trademark, central government may direct such LLP to change its name within 3 months. And steps to incorporation of LLP: 3 steps: reservation of name, filing of Form 2 for incorporation, and execution of LLP agreement, and to be submitted to registrar within 30 days of incorporation. So this was the, ये कल का है, next class का है. So this was the today's class, and hopefully you have enjoyed the class. Please read the provisions, revise कर लीजिएगा. In next class, first of all, we will have the test of what we have discussed today. एक टेस्ट रखेंगे जो हमने डिस्कस किया है, जो परंपरा है चलेगी, और आप लोग प्लीज पढ़ के आइएगा. Thank you so much everyone. Thank you so much for your patience hearing, and all the best to all of you. Thank you.